Welcome back, students. Today we will discuss about the second shifting theorem in Laplace transformation. Our statement is given: if ft is a function of t for all t greater than or equal to 0, whose Laplace transformation exists, that is fs, then for any constant a greater than or equal to 0, the function defined as gt f of t minus a and u t minus a such that whose gt value is 0 if t is less than a, and its value is f of t minus a if t is greater than a. Then Laplace transformation of gt is also exists, and it is given by e to the power minus se fs, where fs is a Laplace transformation of ft. Laplace transformation of ft. Okay, now this is your problem. We have to find the Laplace transformation of function gt defined as 0 if its value lies between 0 and 5, and its value is t if t is greater than 5, by using definition of Laplace transformation and by using second shifting theorem. Okay, so let first हम try करते हैं by definition, and then we will show where we will find the Laplace transformation using second shifting theorem. Okay, तो देख लीजिए Laplace transformation of gt क्या रहेगा आपका, इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus st gt dt. ओके, तो जैसे जैसे आपका gt फंक्शन ब्रेक हो रहा है उस तरीके से हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे. तो 0 से 5 दिस gt इज 0 e to the power minus st dt plus integration 5 to infinity, and this is value is t e to the power minus st dt. Okay, this value is 0, and we will solve it by using integration by parts. So first function is as it is, and first is t and second is e to the power minus t. Integration e to the power minus st and divided by coefficient minus s. Limit is 5 to infinity. Okay, now minus integration 5 to infinity, and integration, the differentiation of t is 1, and e to the power minus st integration and divided by minus s dt. ओके, नाउ आगे देखिए. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो जैसे ही आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, इन्फिनिटी एंड e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी इंटू 0 दैट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, सो वी विल सॉल्व इट. माइनस अपर लिमिट को हम सॉल्व कर रहे हैं, -1/s हमने कॉमन लिया बाहर, और इसको मैं लिखने वाला हूँ दिस इज t and e to the power minus st. okay, this is your upper limit, इसको हम लिखेंगे, and this is 5 to infinity. नेक्स्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/s इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus st dt. ओके, तो इसके लिए -1/s, ये आपका 0 इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है. तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल्स यू कैन राइट 1 and e to the power minus st into minus s, and then you will substitute value, its value becomes 0. okay, अपर लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, 0, माइनस प्लस 1/s, एंड यू विल सॉल्व इट e to the, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे t, तो आपकी वैल्यू आएगी दिस इज 5 e to the power minus 5s. ओके, प्लस 1/s इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus st dt. नेक्स्ट देखिए, ये जो आपकी वैल्यू है, जब आप इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस वैल्यू बिकम्स दिस इन्फिनिटी, दिस वैल्यू बिकम्स 0, तो आपके पास ये रहता है. तो इसको मैं लिखने वाला हूँ 1/s, दिस इज 1/s, तो इसको आप लिखोगे 1/s, दिस इज इक्वल टू 1/s and e to the power minus s 5s, this is 5
and this is also 5. Okay, and plus 1 by s. Integration e to the power minus st, this is e to the power minus st divided by minus s, and इसकी जो लिमिट है वो 5 से इन्फिनिटी। तो अब इसका लिए आप लिखोगे कितना आएगा 5s e to the power minus 5s, and this is minus 1 by s square, minus 1 by s square, upper limit e to the power minus infinity and minus e to the power 5s। ओके, तो ये आपका वैल्यू रहेगा e to the power 5 by s, e to the power minus 5 by s, and minus ये आपका 0 e to the power minus infinity 0, and this minus is plus, so you can write plus 1 by s square e to the power minus 5s। ओके, और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं e to the power minus 5x, आप लिख सकते हो 5 over s plus 1 by s square and e to the power minus 5s. So this is a Laplace transformation of given function by using definition. Now we will check by using second shifting property. तो देखिए second shifting property में जो आपका gt डिफाइन है, in that case you can compare it gt is equal to f of t minus a and ut minus a, 0 if t is less than f of t minus a. Now we have to form this f of t minus a function is here, so you can write gt also can be, you can write gt 0 if 0 to t and 5. So a is 5, your point of discontinuity you can say a is 5, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो this is t minus a, this is minus a is 5 and plus 5. Okay, so you can write t is greater than 5. हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको फंक्शन चाहिए f of t माइनस ए की फॉर्म में, आपका जो वेरिएबल है वो कैसा हो f of t माइनस ए की फॉर्म में। तो यहाँ से आपका जो f of t बनेगा f of t माइनस ए, f of t माइनस ए जो आपका फंक्शन बना वो आपका रहा t प्लस 5 माइनस 5। ओके, तो इस केस में जो आपका एफ टी रहा, दिस एफ टी इज इक्वल टू, इस केस में एफ टी प्लस 5। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसके लिए। ओके, तो देखिए जब आपके लिए होता था आपको इंटीग्रेशन लिखते हो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ टी। ओके, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ टी, तो वो कितना आएगा? यू कैन सी दिस इज e to the power minus s and a, this is a is 5 and f of s। तो जो f of s आपका you will find for f of t, तो f of s निकाल लेते हैं। f of s this is equal to कितना होगा? इंटीग्रेशन 0 to infinity t plus 5 e to the power minus st dt। ओके, नाउ सॉल्व कीजिए। 0 to infinity t e to the power minus st dt plus 5 इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus st dt। तो इसको इसके लिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t to the power 1, so you can write this is 2 s square and plus you also can write 5 and e to the power minus st, this is s। So using this f of s in above you can write Laplace transformation of gt, this is e to the power minus 5s and f of s is your this, so this is f of s 1 over s square plus 5 by s। and you will see, आप देख रहे हो कि your Laplace transformation of t is same as this by definition। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।